So coming to climatography, this is in physical geography, right? So in physical geography, already we have chapters dedicated. I think unit 4 that will be related to climatography. So all of you just go through and 11th class, right? 11th class geography book. तो सेथिरु ताकु टिके डिटेलली देखि नियो तो सेथिरु डेफिनेटली तुमको हेल्प करियो बट आई विल गिव यू ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग such that it will be fast to go through the revision. Okay, so next because we already studied lithosphere, the lithosphere I'm already देखले mountain formation. Before that we saw कि how from lava the mountains are formed, right? Cold mountain, block mountain केमती होची, then intrusive rock कौन, extrusive rock कौन, volcanic landform गोटा देखले, then landform related river system ru erosion deposition कि landform रे sedimentary rock केमती तैयारी होची, then metamorphism rock केमती तैयारी होची, right? Igneous, sedimentary and metamorphism, these all things we have already discussed. So the next part is we are coming to climatography. So whenever we discuss climatography, there are certain things to be keep on the mind. कि first होची composition. तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ଲାଇମେଟ, ସୋ କ୍ଲାଇମେଟ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ତ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଗ୍ୟାସେସ ଯୋଉଗୁଡା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ରହୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି କାଲି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା କଣ ଅଛି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ ନା ଅକ୍ସିଜେନ, ଦେନ୍ ଆର୍ଗନ, ଦେନ୍ carbon dioxide. So the shortcut is no AC. So in atmosphere, like whenever you have to remember, we don't have to use AC. So no AC. N for nitrogen, O for oxygen, A for argon, C for carbon dioxide or carbon monoxide, whatever, carbon dioxide mostly. So point is 0.06%. Then there is neon, helium, krypton, xenon, hydrogen. So hydrogen, if you see, it is coming at the end, and there are other elements also post to hydrogen, but at least we know nitrogen, oxygen, then argon and carbon dioxide. Now, the next concept is when you are trying to move from Earth space, right? From Earth surface, if you try to move upward, jete tome height upuru upuru jibo, gas ro concentration sete kami kami jibo. That means jete upuru ku jibo, because those are gas, right? And gas has certain masses. Am I right? जदि प्रत्येक वस्तुर गोटे मास अच्छी, तार वेट अच्छी, मास लगी ग्राविटी पड़िबो, तो ओब्वियसली से तुमको कोठी मिलिबो, अर्थ रो पाखरे ही मिलिबो ना, because of gravity. That means जते तुम ऊपर को जिवो, गैस रो कंसंट्रेशन कोन हो कमी कमी जिवो. That's what we say, gravity also decreases. जदि टेंपरेचर जते ऊपर को तुम जिवो सते डिक्रीज हे जिवो, गैस भी ऊपर तुमको बेसी मिलिबे ही नहीं. So that's what we call lapse rate. So there is something concept called normal lapse rate, right? तो जिते ऊपर को तुम जिवो पर किलोमीटर रे, जिते ऊपर को तुम जिवो 6.5 डिग्री सेल्सियस रो टेंपरेचर डिक्रीज करबो. इज दैट क्लियर? प्रति किलोमीटर रे 6.5 डिग्री सेल्सियस decrease करियो, or you say 1 degree Celsius will be decreased in every 165 meter if you go above the earth surface. So there is a concept related to going inside the earth crust, right? So earth crust the temperature बढ़े, correct no? And there was a formula, right? केते थिला जदि मु प्रति 1 किलोमीटर डिस्टेंस भीतर को जेबी, then केते डिग्री रो टेंपरेचर चेंज होला? Anyone? Yeah, you can message. In a nose 32 meter रे 1 degree, correct. So jete tome tolu tolu jibo setale tomu temperature change he jibo, to we already know this. Then next concept is कि बर्तमान कथा होची कि गोटे होची अर्थ रो क्रस्ट रे हम देखले सेथरे जेमति लेयर अछि, बर्तमान अर्थ रो ऊपर को जति जिबा हमें अर्थ रो सरफेस ऊपर को बर्तमान पळेबा सेथरे भी लेयर अछि, तो से लेयर ओडा केमति थाए ता विषय हम टिके चर्चा करनवा. सो एटा त हमें जाने नॉर्मल लैप्स रेट प्रति 1 किलोमीटर रे 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होई जाय. देन देयर आर समथिंग कॉल्ड यूवी, दोज आर शॉर्ट वेव. एंड मो साइंस एंड टेक रे भी ऑलरेडी तमु कहि छि कि फर्स्ट तमर रेडियो वेव, देन इंफ्रारेड, then sorry microwave, then infrared, then normal wave जोटा कि तमे कहउछ कि विजन विजिबल लाइट, then तमर कोन आसीबो यूवी, यूवी पर तमर आसीबो एक्स-रे एंड तमर आसीबो गामा रे. am I right? that means जते तमे डाहण साइड को जिवो राइट साइड को सेतेले कोन हबो तमर, जते तमे राइट साइड को जिवो सेते तमर फ्रीक्वेंसी बढ़ी चलिबो, that means wavelength कमी कमी जिवो. am I right? So UV rays are considered to be short wave rays, and these are atmosphere allows to come inside. Those long waves insulated जोटा तमरो आसिकी पडुची, they will be again radiated and they will be stopped in the atmosphere. That means जेतले सूर्य किरण पृथ्वी पृष्ठ रे पडुची UV rays आसीबो, correct no? Then
जो तमर आसिकी एयर पृष्ठ रे पड़िला देन तापर कोन हबो ना जो शॉर्ट वेव गुडा अछि शॉर्ट वेव को तम एटमॉस्फेयर अलाउ करूची बट रेडिएट जतले होची लॉन्ग वेव रेडिएट होची लॉन्ग वेव जतले रेडिएट होची एटमॉस्फेयर रो से माने बाहर को बाहर ही परनाती दैट मींस माने गैस गुडा को ट्रैप कर देउछन ए वेव गुडा ट्रैप हो तो काली क्वेश्चन जदी आसी गला इंसोलेशन एंड रेडिएशन तो इंसोलेशन रे कोन हबो ना दोज आर द रेज दैट आर बीइंग पास्ड बाय द एटमॉस्फेयर बिकॉज़ दे आर शॉर्ट वेव रेज like UV rays but when radiation होची earth surface को those are considered to be long wave rays right long waves तो से long wave गुडा को से माने कोन हो जाउछन जे ट्रैप हो जाउछन जे एटमॉस्फेयर रे जोथि ପାଇଁ कि तम एटमॉस्फेयर जनरली तमर कोन होची हीट हेकी रहउची गरम हेकी रहउची ठीक है इज दैट क्लियर एंड जदी सबु अधिक रु अधिक गैस तम रिलीज करला एंड सबु तो एटमॉस्फेयर रे रह गला देन देयर इज कांसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कि एटमॉस्फेयर आहुरी उत्तप्त हेकी रहइबो इज दैट क्लियर एतिकी तमे जानि छ ओके फाइन नाउ नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर रो डिफरेंट लेवल तो जदी तमे देखिबो इक्वेटर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर थर्मोस्फेयर तो से जरे हमें कहउछे थर्मोस्फेयर ता आयोनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ट्रोपोस्फेयर जनरली इक्वेटर रो 18 किलोमीटर डिस्टेंस जतले जीवो दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रोपोस्फेयर दिस इज अर्थ सरफेस इक्वेटर हो या फिर को भी सरफेस नहीं जा तो इक्वेटर रो जदी तमे सबुठ देखिबो सबुठ मैक्सिमम डिस्टेंस किलोमीटर रहउची किंतु जदी तमे पोल आडू को जीवो generally troposphere distance from earth surface at the pole will be lesser as compared to equator direct straightforward question correct no then एथिरे जदी तमे कांसेप्ट जानते ओके एठी लागिवो कांसेप्ट कोन ग्रेविटी रो कांसेप्ट कि जनरली इक्वेटर रे ग्रेविटी लेस बट इन जो देखिबो कोठी पोल रे ग्रेविटी कोन थिबो अधिक थिबो ना नहीं बिकॉज़ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r am I right and जदी रेडियस मु कहबी ताले पोल रो रेडियस अधिक ना इक्वेटर रे रेडियस अधिक इक्वेटर रे रेडियस अधिक जदी इक्वेटर रे रेडियस अधिक दैट मींस ग्रेविटी इक्वेटर रे कम जदी ग्रेविटी इक्वेटर रे कोन हो गैस माने अधिक हाइट रे थिबे सो दैट इज वन कांसेप्ट व्हाट वुड बी द सेकंड कांसेप्ट इज जदी देखिबो तमे सूर्य सूर्य कोठी रहउची इक्वेटर रीजन रे जदी इक्वेटर रीजन रे सूर्य रहउची देन सबुठ अधिक गरम कोठी हबो इक्वेटर रे देन गैस गुडा भी गरम हेले से माने कोन करबे हल्का हेबे हल्का हला पर से ऊपर उठिबे तो इक्वेटर रे उठिबे बट पोल रे से बळे सूर्य किरण ही नहीं देन माने कंडेंसेशन हेकी बसी की रहउथे देन ट्रोपोस्फियर रे से माने मैक्सिमम हाइट एठी से 8 किलोमीटर थिला एठी होउची केते 18 किलोमीटर इज दैट फाइन जन आई हैव टोल्ड ट्रोपोस्फियर देन जदी मो स्ट्रेटोस्फियर जीबी देन एठी कोन हे जाउची ना टेंपरेचर ट्रोपोस्फियर रे जते मो पुरु जीबी टेंपरेचर सेते डिक्रीज करी करी जीवो दैट्स व्हाट वी कॉल नॉर्मल लैप्स रे बट जदी मु 0 रु गली 18 किलोमीटर पर लगभग मते ओटे टेंपरेचर मिला -60 डिग्री सेल्सियस देन स्ट्रेटोस्फियर रे कोन होची ना एठी रहउची तमरो ऑक्सीजन बिकॉज ओजोन रहउची O3 एक्चुअली ओजोन रहउची ओजोन कोन हबो ना जतले सूर्य किरण आसुची तो तमरो ओजोन टा समथिंग दे विल मेक ए स्ट्रक्चर लाइक दिस ऑक्सीजन रो वैलेंसी 2 तो O3 रो स्ट्रक्चर एंति रहबो तो जतले गोटे आसिला वेवलेंथ नाउ एवरी वेवलेंथ दे आर एसोसिएटेड विथ एनर्जी बिकॉज एनर्जी इज टू बी h nu this nu is nothing but frequency I can write it as hc by lambda lambda is nothing but wavelength now every wave सूर्य किरण रो जो वेव आसुची सेतिरे वेवलेंथ अछि ना नाही and c is nothing but the speed of the light and h is nothing but Planck's constant so this is a constant and this is directly proportional so that means energy is directly proportional to your frequency that means energy is directly proportional to your lambda also I am just covering some part of science and tech okay basic science that means any wave that means they contain energy जदि सेही energy आसी कि गोटे तमरो ओजोन रे पडिला see this is also one of the main question I think in OPSC they have asked कि ओजोन ट्रोपोस्फियर रे केमती चेंज होची I am not able to recollect exactly the question but this is what the equation we had to write I think last year I wrote the mains right that equation we had to write कि how this is actually reflecting right कि any energy when it will come and it will try to break this bond any energy you give there will be a breakage of the bond that means there will be release of O2 and there will be oxygen and in this reaction there will be also energy so energy means heat energy द्वारा release भी हुए that means by default as you told कि ठीक अछि 18 किलोमीटर जाए -60 हे गला then according to normal हेड जते ऊपर ऊपर को जिबे सेता डिक्रीज होवा कथा but there is a situation troposphere रो stratosphere मधुर गोटे आसीबो ट्रोपोपॉज पॉज माने सेही एरिया जो थरे बेसी कोनोसी चेंजेस नाही कांस्टेंट वाला रिलेशन बनुची देन हठात किना तम गोटे ग्रेजुअल चेंज देखा जिवो ग्रेजुअल चेंज कोन ना एठी जेतले तमरो ऊपर ऊपर गले टेंपरेचर कमो थिला एठी तमे जेतले ऊपर ऊपर जो टेंपरेचर बढ़िवो ए कंडीशन एठी आसीबो नै जेते ऊपर को जो टेंपरेचर बढ़ुतला
कहीं ना एठी कहीं हीट होउतला देखो ना -60 रु एठी जेतले ट्रोपोस्फियर सरी जाउची सेतले 0 डिग्री पळे आछी दैट मींस -60 देन -40 -30 देन व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन ए जो O3 थिला O3 जेतु वेवलेंथ यूवी रे को से अब्जॉर्ब कर दे की जेतले ब्रेक होउची सेतले एनर्जी रिलीज होउची से हीट एनर्जी ही ए एरिया टाको गरम कर देती बुझियला ना बुझियला नहीं okay so that's what we also called as a temperature inversion कोन कहू आमे ताको टेम्परेचर इन्वर्जन तो से टेम्परेचर इन्वर्जन रो कांसेप्ट इवन तमे केतले पढिबो ना जेतले पृथ्वी बहुत गरम हबो करेक्ट नो पृथ्वी गरम होला परे से गैस कोन हबो ना ऊपर उठी गला परे तळ लेयर जोटी सरफेस अछि सरफेस ठंडा किंतु जेहेतु गैस उडा गरम हे कि ऊपर क्लाउड रे ट्रैप हे जबे ए क्लाउड वाला रीजन गरम हे जाय दैट मींस तळे ठंडा ऊपर गरम जोटा कि नॉर्मल टेम्परेचर केस रहबा कथा नो नॉर्मल लैप्स रेट अनुसार जेते तमे ऊपर को जीवो सेतले तते सेते तुमको कम कम टेम्परेचर हवा दरकार जदि तळे मोर 20 डिग्री सेल्सियस अछि ऊपर मते 0 डिग्री सेल्सियस मिलिया दरकार बट इन रियलिटी रात हुए कि तळ जल्दी ठंडा हे जीवो ट्रू बट ऊपर गरम दिवो दिस इज व्हाट वी कॉल टेम्परेचर इन्वर्जन इज दैट क्लियर ओके नेक्स्ट कांसेप्ट इज कि दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रोपोस्फियर गला स्ट्रेटोस्फियर गला नेक्स्ट होची स्ट्रेटोस्फियर पर जेते आमे कहू मेसोस्फियर तो मेसोस्फियर रे कोन थानी ना मीटियर देन तमर एस्ट्रॉइड वगैरह से गुडा सब आसी कोठी जळा जळीबे ना मेसोस्फियर वगैरह से माने सेठी कोन होनी जळी जाते सो 0 डिग्री अगेन एठी कोन हबो ना तमर टेम्परेचर राइज करबा जगह रे टेम्परेचर फॉल डाउन हबो दैट मींस आई एम सेइंग फ्रॉम ट्रोपोस्फियर temperature decreases then temperature rises in stratosphere then mesosphere again further temperature decreases is that clear temperature decrease करिवो then आसीबो तमरो थर्मोस्फियर तो थर्मोस पूर्वरु गोटे अछि कोन ताकू कोनदी कर्मन लाइन कोन कोनदी कर्मन लाइन सो जदि तमे देखियो अप टू आमे को पळेले 18 किलोमीटर 18 रु स्ट्रेटोस्फियर पय आमे 50 किलोमीटर पळेले देन तापर नेक्स्ट होची आमे जाउची 80 किलोमीटर तो ए 80 किलोमीटर रे समहाउ चार्ज पार्टिकल रह जाते ना इलेक्ट्रॉन्स अलग है कि रह जिवे एंड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होइबे जेहेतु पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होइबे दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज आयोनोस्फियर so ionosphere रे generally there are different layers d layer e layer and f layer okay तो d layer जोठी होची लो फ्रीक्वेंसी e layer जोठी होची मीडियम फ्रीक्वेंसी f layer इज द हाई फ्रीक्वेंसी तो तम अर्थ सरफेस रे जदी गोटे एंटीना अछि ए एंटीना रो सिग्नल ए जाय जीवो एंड सेइठू जो फ्रीक्वेंसी जदी d layer हैला जदी लो फ्रीक्वेंसी दरकार फॉर एग्जांपल 100 हर्ट्ज गोटे मु कहूची 200 हर्ट्ज आ गोटे होची 1 गीगाहर्ट्ज देन 1 गीगाहर्ट्ज मु कहबी कि दिस इज एफ लेयर this is e layer and this is d layer based on the ionosphere जो इलेक्ट्रॉन्स रो कॉन्फ़िगरेशन अछि एठू तमे सिग्नल छाडलो एंड से सिग्नल रिट्रेस बैक करिवो based on the frequency d e f तीनटा लेयर हे गला so up to 100 megahertz return back else goes to sphere space that means 100 हर्ट्ज जाय जदी तमे कहउछ कि फ्रीक्वेंसी जोटा कि रिटर्न पळे आसी दैट मींस सैटेलाइट जदी किछु गोटे कनेक्शन अछि जदी तमे किछि रिटर्न करिया को चाहतो देन से रिटर्न पळे आसी बट 100 हर्ट्ज ऊपर को जदी फ्रीक्वेंसी गला देन से आउ रिटर्न करियार कैपेबिलिटी नै से स्पेस को ही पळेबो जदी एमिति कोनोसी फ्रीक्वेंसी तमे ट्राई करतो सेंड करिया पई देन 100 हर्ट्ज ऊपर को अछि ताहाले सी जेताले फ्रीक्वेंसी बढ़ी चलिबो दैट मींस वेवलेंथ कमी चलिबो करेक्ट जदी वेवलेंथ कम होती देन तमरो क्लाउड ताकू रखी ही परिबोनी जहां भी हमें देखले ना यूवी रेज जदी तारो वेवलेंथ कोन थिला वेवलेंथ कम थिला जोथमे कि से सरपास करि जाउतला जदी वेवलेंथ बढ़ी जीवो दैट मींस फ्रीक्वेंसी कमी जीवो ताले से ट्रैप हे जीवो दैट मींस कम फ्रीक्वेंसी ट्रैप होबो कम फ्रीक्वेंसी रिटर्न हे परिबो किंतु मैक्सिमम जदी 100 मेगाहर्ट्ज जाय अछि रिटर्न हे परिबो बट 100 मेगाहर्ट्ज को जदी अधिक फ्रीक्वेंसी ला फ्रीक्वेंसी मींस कोन पेनिट्रेशन कैपेसिटी राइट जते अधिक फ्रीक्वेंसी सेते से माने अधिक पेनिट्रेट करके पळेबो देन माने रिटर्न केमति तमे करबो गोटे जिंस जदी पेनिट्रेट करके गोटे जिंस को पळेबो देन से रिटर्न होबार ही नै गोटे बुलेट से रिटर्न हे परिबो कि अनलेस अंटिल सेही भलिया गोटे ऑब्जेक्ट सहित से माड होबा दरकार जोथि ताकू से पेनिट्रेट न कले ही रिटर्न करबो आ जदी से पेनिट्रेट कर जाउ रिटर्न होबार चांसेस नै am I right so there is a limitation of the frequency which is 100 megahertz ता ऊपर को जदी तमरो फ्रीक्वेंसी अधिक हो गला ताले से स्पेस को पळेबा दिस इज व्हाट वी कॉल आयोनोस्फियर रो कांसेप्ट देन जदी ता ऊपर को मु जीबी देन आसी जो हमर एक्सोस्फियर 640 से पड को पळेली दैट इज एक्सोस्फियर एनी डाउट इन दिस ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर आयोनोस्फियर एक्सोस्फियर क्लियर नाउ तो तुम एनसीईआरटी बुक रे तुम देखो ये गोटे ग्राफ मिल जाए तो ये ग्राफ रे जदी मु कहली कि दिस इज रिलेटेड टू टेम्परेचर दिस इज रिलेटेड टू ओके दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टेम्परेचर एपट साइड रे एंड एपट साइड रे डिस्टेंस ठीक अछि जेते मु ऊपर को डिस्टेंस दिबी सेते मोर
टेम्परेचर चेंज ही जिवो तो आगो मु इनिशियली स्टार्ट करले 0 0 जोटा कि मु कहूची आर्थ रो सरफेस भाबिनो 20 डिग्री सेल्सियस थिला सरफेस रे या फिर नॉर्मली ओडिसा परसेंट रे मु देखि इन एन एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस थिला ऊपर को जते हाइट को गली मोर कोन हबो ट्रोपोस्फियर रे कोन हबो टेम्परेचर बढ़िबो ना कमिबो टेम्परेचर कमी कमी जिवो करेक्ट Decrease. correct so somehow let's suppose I found a point which is like minus 60 degree celsius okay let's see हम virtually ताले ए जो 0 डिग्री लाइन ता सेटा लगभग ए माने रहया कथा बट somehow मु कहू एटी minus 60 डिग्री हला ठीक अछि जस्ट अज्यूम इट तो ये डिक्रीज कला देन देयर इज ए ट्रोपोपॉज करेक्ट तो गोटे पॉज आसिला जोटी टेम्परेचर तमरा कांस्टेंट रहला कोन सी चेंजेस आसिला देन हठात किछि समय परे देन स्टार्ट कला टेम्परेचर राइज होआ पे देन minus 62 एटी पुनी पळे आला कोन ना 0 डिग्री ट्रू देन सेठी मिली गला मते कोन स्ट्राटोपॉज 0 डिग्री कंटीन्यूअसली रहला 2-3 किलोमीटर देन हठात कोन हला टेम्परेचर डिक्रीज करिया स्टार्ट हो गला देन जोटा कि होला मेसोस्फियर परे जते ऊपर को दिबी टेम्परेचर सेते बढ़ी चलियो थर्मोस्फियर रे टेम्परेचर बढ़ी ही चलियो काहे कि बिकॉज़ यू आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स क्लोजर टू सन एम आई राइट जते तमे सूर्य आडू को ही जीवो देन सेतेले तमर कोन हबो टेम्परेचर राइज कर चलियो correct so this is the graph this has to be clearly understood and this is what related to temperature और height रो गेम जोटा कि होची तमरो ट्रोपोस्फियर रे कि जेतले तमरो हाइट अधिक थिबो हाइट रु जेतले हाइट कमिबो टेम्परेचर आल्सो कमी कमी चलिबो देन गोटे सिचुएशन आसीबो जो सिचुएशन परे जते हाइट बढ़िबो टेम्परेचर कमिबो ट्रू दिस इज ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर ट्रोपोस्फियर कि हाइट बढ़ी छि हाइट बढ़िला बेले टेम्परेचर कम थिबो जेतले हाइट कमिबो टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी चलिबो दिस इज ओनली फॉर एप्लीकेबल फॉर troposphere then stratosphere mesosphere okay otherwise this is the graph that we have to focus any doubt in this at least इतकी क्वेश्चन तो करी जो नेक्स्ट the next concept is related to wind तो air जोटा that is a mixture of different gases everyone knows now the air रो जो मूवमेंट हबो जदी से मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हैला see I am saying two type movement of air in horizontal direction तो जनरली से कोठ होबा हाई टू लो जदी मु वाटर रखि देछि वाटर जदी गोटे स्लोप रे रखि देछि एठी जदी वाटर ढालिली जदी स्लोप मिलेला ताले वाटर रो मूवमेंट करेक्ट नो आ वाटर रो मूवमेंट सब बेले कोठ होबो ना हाई अपलैंड रु लो अपलैंड कि जोठी जोटा टिके हाइट रे थिबो आ जोठी कम हाइट थिबो हाई रे जदी जो वाटर अछि सेठी आ जदी मु एठी पानी ढालिली से थोड़ी ऊपर उठिबो ही नै करेक्ट अनलेस अंटिल यू यूज सम एक्सटर्नल एजेंसी फॉर एग्जांपल मोटर लगे कि पानी उठौछथि ट्रू दैट मींस सिमिलरली जदी कोठी गोटे हाई प्रेशर क्रिएट होउची भाबिने एठी गोटे हाई प्रेशर क्रिएट हला एंड एठी लो प्रेशर क्रिएट हला देन विंड रो मूवमेंट तो नो एयर रो मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड विंड इज दैट क्लियर जदी वर्टिकली हला वी डोंट कॉल इट एज विंड वी कॉल इट एज करंट एनी डाउट डिफरेंस बिटवीन विंड एंड करंट क्लियर air ro movement horizontally wind vertically current now there is something called pressure gradient so what is pressure gradient ना जदी तमरो प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होला फॉर एग्जांपल दिस इज वन प्रेशर जोन भाबिनो एठी 20 पास्कल प्रेशर अछि एंड एपटे भाबिनो 10 पास्कल प्रेशर अछि तो ए पूरा एरिया दिस इज वन एरिया एंड दिस इज वन एरिया तो आंको भितरे जो डिफरेंस दिस परपेंडिकुलर लाइन एटा होची तमरो 20 प्रेशर एरिया 20 पास्कल रो प्रेशर एरिया एपटे एरियाटा होची 10 पास्कल रो प्रेशर एरिया सो प्रेशर पास्कल रे पापा जाए फोर्स पर यूनिट एरिया करेक्ट नो सो नाउ ग्रेडियंट कोन ना डिफरेंस ए जो डिफरेंस जोटा कि वर्टिकल नो तो माने जोटा 90 डिग्री रे थिबा आको भीतर जदी मु चेक करबी 90 डिग्री दैट इज व्हाट वी कॉल प्रेशर ग्रेडियंट सो ताको मापंती कोथरे ना बारोमेट्रिक स्लोप रे सो विंड रा स्पीड जेते अधिक तमरो प्रेशर ग्रेडियंट हबो दैट मींस एठी प्रेशर ग्रेडियंट केते ना 10 डिफरेंस केते 10 जदी मु कहबी एटा 0 होई गला देन प्रेशर ग्रेडियंट केते 20 जेते अधिक प्रेशर ग्रेडियंट सिंपल नो गोटे स्लोप एमिति अछि ए स्लोप रे मु पानी ढालिबी आ गोटे स्लोप एमिति अछि ए स्लोप रे मु पानी ढालिबी कोठी तमको लागुची पानीटा जल्दी आसीबो ए आउ बे रे पानीटा जल्दी तळु कोथरे खसदियो ए रे ना बे रे बे रे करेक्ट नो व्हाई बिकॉज़ द स्लोप इज मोर हियर द स्लोप इज 30 degree and let's suppose here the slope is 60 degree the more the slope the more faster it will move similarly the more difference between the two pressure zones correct no हाई प्रेशर लो प्रेशर एई कांसेप्ट रु ही आसीबो तमरो कोन ना तमरो एलिनो लालिनो रो कांसेप्ट कि जेतले तमे कहो कि माडागास्कर रीजन रु हाई प्रेशर सफिशिएंट हाई प्रेशर क्रिएट हवा दरकार काहे ना तिब्बत रीजन रे से जो पामिर राइट तो से रीजन रे जेतले सेटा गोटे प्लेन अछि से प्लेन एरिया रे जेतले अधिक रु अधिक लो प्रेशर क्रिएट हबो देन सफिशिएंट हाई प्रेशर एंड सफिशिएंट लो प्रेशर
it will be very easy for the air to move in a horizontal direction. That's what we called it as wind. And যেতବେଳେ ସେ wind ଚାଲିବ ସେ ଯେତେବେଳେ moisture ନେଇକି ଚାଲିବ କୋଉଠୁ ନା Indian Ocean ରୁ then sufficient amount ର ବର୍ଷା ହବ ସେଠି ଦରକାର ପଡିଲେ ତମର କଣ ହବ ନା cyclone ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବନିବନି we call it as like what is that flood ବି ନୁହଁ but ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବର୍ଷା ହବ correct ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା disaster वाला situation ବି ଆସି ଯାଇ ପାରେ. So this is what we called El Nino wala concept. But what we have to remember is the more the pressure gradient, that means more is the difference between two pressure zones, the more will be the speed of the wind. So it also depend upon the temperature. ଯେତେ ଅଧିକ temperature ହବ pressure ସେତେ ଅଧିକ ବଢିବ correct no. Low pressure କେତେବେଳେ ଅଧିକ create ହବ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ temperature ହବ. High pressure କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ କମ temperature ଥିବ. True ହଁ କି ନାହିଁ? Okay. next ଆଉ ଗୋଟେ concept କଣ ନା ଯଦି ତମେ କହିଲ କି पूरा ए लाइन टारे भाबिनो एटा गोटे वर्क सरफेस ए लाइन टारे तमरो अछि सेम प्रेशर कि 200 पास्कल रो प्रेशर नै एठी अछि 100 पास्कल एठी अछि 10 पास्कल एंड भाबिनो एठी समथि 0 पास्कल दैट मींस वी आर सेइंग द पॉइंट वेयर एवर द प्रेशर इज सेम वी कॉल इट एज आइसोबार कोन कहौ जे ताकू आइसोबार प्रेशर सेम अछि पूरा एरिया टा जगह प्रेशर सेम अछि सब जोठी मु चेक करबी एठी गोटे मु पॉइंट नेबी प्रेशर 200 पास्कल एठी मु चेक करबी प्रेशर 200 पास्कल एरिया रे जते पॉइंट नेबी सबुठी 200 पास्कल दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आइसोबार सिमिलरली दिस इज आल्सो कॉल्ड वन आइसोबार दिस इज आल्सो कॉल्ड वन आइसोबार दैट मींस in between two isobars if I will try to see the wind direction the wind will always flow from high pressure to low pressure that means the wind direction सब बेले एई डायरेक्शन में ही हबो now तो कथा होची जदी एटा गोटा अछि एमती एठी गोटा अछि एमती एटा भाबिना 100 पास्कल एटा होची 50 पास्कल ताले विंड डायरेक्शन एमिति जिवा कथा स्ट्रेट फॉरवर्ड 90 डिग्री but in general when they saw there is not 90 degree wala wind flow somehow wind is trying to shift that shift is due to coriolis force and why there is coriolis force because of the earth rotation kali jodi question asla coriolis force is because of earth revolution the answer will be wrong it is because of the earth rotation is that clear? Is that clear? Okay. At equator, Coriolis force will be 0, but at pole it is maximum. So equator रे Coriolis force 0 था जो थी पाएंगी wind will be parallel to the gradient. Parallel to the gradient means this is our pressure zone. भाबिनो 100 Pascal. This is 50 Pascal. That means इतरे जो wind flow को पटो हबो 100 to 50 भाई. तो ये सीधा जीवा कथा इक्वेटर रे जेहेतु कोरियोलिस फोर्स नहीं ये जेमिति सीधा जीवा कथा सेमिति सीधा जीवा मोड़ी हवार चांस ही नहीं. True. That means this is also what I called as pressure gradient. हाँ कि नहीं प्रेशर ग्रेडियंट भी तो सही है ना जदी एटा गोटे प्रेशर जोन एटा गोटे प्रेशर जोन दिस इज माय प्रेशर ग्रेडियंट दैट मींस द विंड डायरेक्शन भी ए डायरेक्शन नहीं जो जोटा कि पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट दिस इज माय प्रेशर ग्रेडियंट एंड विंड डायरेक्शन ता सहित पैरेलल नहीं चलियो कोठी ना इक्वेटर एनी डाउट एंड बिकॉज ऑफ दिस कांसेप्ट आल्सो कि जदी तमे देखिबो कि आमे जो कहउतले कोन ओशन करंट सेतले जेतले इक्वेटर रे कहउतले आमे इक्वेटर रे ताकू मोडू हुई नथिले से इक्वेटर रे आसी कि पूरा स्ट्रेट एमिति ही चालुतला पैरेलल टू द प्रेशर ग्रेडियंट हां जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रे विंड रो जो डायरेक्शन जाउची रोटेशन जो डायरेक्शन जाउची तार अपोजिट डायरेक्शन रे तमरो करंट होउतला राइट वाटर रो वार्म करंट कोल्ड करंट वाला जेतले डिस्कशन करतले बट इक्वेटर रे तो पूरा इक्वेटर रे ही सीधा रे होउतला बिकॉज़ अगेन कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो एब्सेंट देयर any doubt in this okay next concept is something related to this is our surface let's suppose this is the surface then we understood two things one is when the air movement in horizontal we call it as wind when air movement in vertical we call it as current am I right now बर्तमान मु जीबी कि सरफेस आ बर्तमान सरफेस ऊपर को भी जीबी जोटा कि मु तुमको कहूची आकाश कारण नो जोटा क्लाउड तमे देखो क्लाउड तमे सरफेस रे थोड़ी देखो क्लाउड तमे जनरली कोडी देखो सरफेस रु किछि हाइट रे ट्रू हां कि नहीं ओके दैट मींस जदी एटा मोर सरफेस हैला देन गोटे जगह रे तो लो प्रेशर बनिबो गोटे जगह हाई प्रेशर बनिबो जोठी हाई प्रेशर बनिला हाई प्रेशर रो जनरली कोन हबो विंड रो मूवमेंट टुवर्ड्स लो प्रेशर हबो हां कि नहीं भाबिनो एपटे हाई प्रेशर बनला एठी लो प्रेशर बनला समहाउ एपटे लेट सपोज एठी गोटे जगह अछि जोठी हाई प्रेशर अछि ठीक अछि तो एठू ताले बते विंड रो डायरेक्शन कोडा हबो टुवर्ड्स प्रेशर जोन ताले लो प्रेशर रे कोन होउची जनरली चारि आडू जुआडे जुआडे हाई प्रेशर अछि सियाडू सियाडू तमरो विंड आसुची जदी विंड आसुची ताले ताको हमें तम कोन कहया कन्वर्जेंस सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लो प्रेशर इज रिलेटेड टू कन्वर्जेंस काली क्वेश्चन आस दे पारे कि भाई लो प्रेशर रीजन इज आल्सो रिलेटेड टू डाइवर्जेंस इज दैट ट्रू
लो प्रेशर रे कन्वर्जेंस हुए डाइवर्जेंस केतेबेले हबो ना तम पाखरे एठी विंड अछि एठी मॉइस्चर अछि एंड विंड फ्लो कला हॉरिजॉन्टली एंड से नेई की ही पळौछि एंड नेई की अलग जाऊ केतेबेले जीव जेतेबेले ये ही नीचे हाई प्रेशर थिबो दैट मींस डाइवर्जेंस सो हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ डाइवर्जेंस लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट convergence any doubt fine now the next is कि जदि बर्तमान तमरा एयर अपलिफ्ट कला दिस इज व्हाट आई विल से करंट दिस इज आल्सो व्हाट आई विल से करंट करेक्ट नो सो एयर जतले अपलिफ्ट कला वर्टिकली देन ऊपर को से जीवो दैट मींस एठी जदि लो प्रेशर अछि लो प्रेशर रे कोन हबो जोठी टेंपरेचर तमरा अधिक गरम होला से गैस ओडा कोन हबो गैस ओडा सेठी आ रहिबेनी से माने सब ऊपर को पळे तो जतले ऊपर को ही जीवा स्टार्ट होबे अपलिफ्ट हेले देन तळे तयारी करे कोन लो प्रेशर करेक्ट तळे लो प्रेशर बट ऊपर कोन हबो हाई प्रेशर am I right because समस्त जाई गोटे जगह रही जिवे ना देन सेठी हाई प्रेशर एनी डाउट इन दिस तळे लो प्रेशर क्रिएट होला बिकॉज सफिशिएंट टेंपरेचर थिला जोथि पे कि गैस ओडा हल्का हले एंड गैस अपलिफ्ट कला ऊपर को जोटा कि हमें करंट कहले अपलिफ्ट हेले ऊपर जाई कि भाबिनो ए गोटे जगह रे सफिशिएंट अमाउंट रो गैस रह नेक्स्ट एपटे डाइवर्जेंस अछि दैट मींस एठी कोन हैछि ना सफिशिएंट लेवल रो हाई प्रेशर जदि एठी सफिशिएंट लेवल रो गैस एकाठी हेले एमिति गोटे सिचुएशन आसीबो दैट मींस एठी जदि हाई प्रेशर होला समहाउ तार आउट टिके आगु गले मते लो प्रेशर मिलियो एपटे सेमिति आउ गोटे टिके आगु गले मते लो प्रेशर मिलियो दैट मींस एई जो जोनटा जोठी तळे जदि सरफेस रे तमरो लो प्रेशर होउची तार ऊपरे किछि किलोमीटर ऊपरे सेठी कोन बनियो हाई प्रेशर जोठी तळे तमरो हाई प्रेशर अछि तार जदि आकाश रे मु देखिबी किछि किलोमीटर ऊपरे मते किनि बनियो लो प्रेशर दैट मींस ये माने गोटे साइकिल कंप्लीट कर दोछन करेक्ट नो ये माने गोटे साइकिल कंप्लीट कर दोछन कि भाई सूर्य किरण पड़िला सफिशिएंट अमाउंट रो एठी गरम हो जदि मु अर्थ पर्सपेक्टिव रे कहिबी अर्थ रो सरफेस दिस इज 0 डिग्री तमे जानछो सूर्य वर्तमान रहिबे कोठी ना भाबिनियो सॉरी ओके ठीक अछि लेट भाबिनियो एटा होत तमरो 23 अधे एपटे होती 23 अधे सो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ दैट मींस तमे मते को एई तक रीजन सफिशिएंट लो प्रेशर होबो ना नै वर्ष जाकरे केबे ना केबे तो एठी लो प्रेशर क्रिएट की होतबो जेताले सूर्य काई ना सूर्य तो एई भीतर फॉर एग्जांपल इफ आई विल टॉक अबाउट डेट कैन यू टेल मी in equator whenever when there will be sufficient amount of low pressure there will be two dates in the year what are the two dates anyone march 21 september 23 true so these are the two dates where we will have sufficient low pressure at 0 degree correct similarly there will be a date where bhubaneswar will also will have become sufficient low pressure in the entire year correct no तो मते तमे कहो कि जदि मु कहबी कि भुवनेश्वर रे सबुटु सफिशिएंट लो प्रेशर को मास भीतर हो वर्षर को मास भीतर भुवनेश्वर रे मते एटलीस्ट सफिशिएंट मु कहूची मास भीतर करेक्ट नो दैट मींस मते सफिशिएंट लो प्रेशर मिलियो कोन लागुची खरा दिन हो ना शीत दिन हो will it happen in summer or will it happen in winter or it can happen once in summer once in winter it will happen in summer now summer pai mate date कोन दरकार ना गोटा होची मार्च आ गोटा होची सितंबर दैट मींस मार्च रु नै कि सितंबर भितरे भुवनेश्वर रे डेफिनेटली दीटा डेट आसीबो जो डेट रे सफिशिएंट अमाउंट रो लो प्रेशर हो सिमिलरली मु जदी साउथ को जीबी जदी मु साउथ को जीबी मते को लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया कम समय रे हियर ओके कि भाबिनो 21 डिग्री सेल्सियस साउथ तो बर्तमान मते को ऑस्ट्रेलिया पई को टाइम पीरियड रे भितरे निहाती दी थरो तो लो प्रेशर हो व्हाट डू यू थिंक को मास भुवनेश्वर पई मार्च टू सितंबर व्हाट अबाउट फॉर ऑस्ट्रेलिया सेप्टेम्बर टू मार्च वेरी नाइस सो बिकॉज सेप्टेम्बर एठी पळे आसला ना देन सूर्य तळकु जे स्टार्ट करिवे देन डिसेंबर आसी गला डिसेंबर रो देन सूर्य ऊपर को जिवे देन मार्च पळे आसला ए भीतर तो दीटा पोजीशन एमिति आसीबो जोथरे कि सूर्य 21 डिग्री सेल्सियस सॉरी 21 डिग्री साउथ रे डायरेक्ट थिवे जोथरे कि तांकर लो प्रेशर क्रिएट हबो होप इट इज क्लियर okay now जदि एठी low pressure create hela that means definitely there will be a region which where it will have high pressure in the same surface and surface रे that means surface means horizontal तो horizontal movement of air what do we call it as wind true तो जोठी लो प्रेशर क्रिएट हबो सेठु कोन हबो ना जो टेंपरेचर अधिक पड़ला माने सेठी सरफेस तातिबो सरफेस को लागितबा एयर मॉलिक्यूल्स तातिबे तातिले से माने हल्का हेबे एंड हल्का हेले से माने ऊपर को उठिबे तो जदि तळे लेट सपोज दिस इज द पोजीशन एट मार्च 21 0 डिग्री ठीक अछि
सरफेस तातिला देन से ऊपर को उठिले देन मु जदी 0 डिग्री रे टिके ऊपर को जीवी आकाश को लगभग 10 किलोमीटर ऊपर मते कोन मिलियो से गैस उडा आसी एकाठी हेले बिकॉज़ गैस जते ऊपर को जीव सेते कंडेंसेशन होबा स्टार्ट कंडेंसेशन माने मॉलिक्यूल बर्तन कंडेंसेशन हेले देन सेठी हाई प्रेशर क्रिएट हो देन से हाई प्रेशर रु आकाश रे भाई फ्लो करिवे डाइवर्जेंस क्रिएट करिवे ट्रू आकाश रे डाइवर्जेंस क्रिएट करिवे को एरिया को ना मे बी 30 डिग्री आडे जीवे तो 30 डिग्री रे जाकी पुणी से कोन करिवे कन्वर्ट करिवे जोथरे कि हमें साइकिल पढिबार अछि कि देखो तमे 0 डिग्री रे एटा मु कहबी जेताले एठु एटार क्लियर ए साइकिल रो क्लियर क्लैरिटी थिबो ना देन तुमको एटा भी बुझा पड़ जो ठीक अछि तो एठी कोन हला मु कोन कहली तळे लो प्रेशर क्रिएट हला ऊपर को उठिले ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हला हाई प्रेशर इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंस दैट मींस ए गैस उठी की एपट को मूवमेंट करिवो ए गैस उठी की एपट को मूवमेंट करिवो देन एठी हठात ना लो प्रेशर हला तो लो प्रेशर रे कन्वर्जेंस हो दैट मींस एपट जदी कोठी गोटे लो प्रेशर हेची तळे लेट्स सपोज लो प्रेशर एठी भी गैस ऊपर को एमिति कन्वर्ज हेतिबो एपट जाई के एमिति कन्वर्ज होतबो ये तळु को आसीबो ये गैस टा तळु को आसीबो दैट मींस एठी कन्वर्जेंस हला एठी सब कन्वर्जेंस हला बट समहाउ गैस जेतले भारी होउची बिकॉज़ हाइट रे अछि देन धीरे धीरे तळु को आसीला सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द पीरियड वेयर वी आर सेइंग दिस इज द करंट तो बर्तन ये तळु को आसीबो एंड तळु को आसीला पर ए रीजन होची डाइवर्जेंस तो एमिति अल्टीमेटली हैला कोन एठी जेतले आसीला से पुनी डाइवर्ट हे गला एठी जेतले पुनी आसीला से पुनी डाइवर्ट हे गला तो अल्टीमेटली हैला कोन दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए साइकिल कि लो प्रेशर रो गैस ऊपर को उठिला करंट उठिला देन हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कला सो सरफेस रे तुमको विंड देखा जिवो इवन ऊपर भी तुमको विंड देखा जिवो देन जदी गोटे दीटा हाइट रो नै जिवे हाइट रे मते करंट मिलिबो देन अगेन मोर सर्कल कंप्लीट हे गला सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वन कंप्लीट सर्कल करेक्ट गोटे लो कन्वर्जेंस आउ डाइवर्जेंस तारो लो प्रेशर आउ हाई प्रेशर विथ कनेक्शन एनी डाउट इन दिस सर्कल now ta saita associated concept now concept is if it is high pressure zone it is called stable condition that means सेठी कौन सी डिस्टेंस होवार नहीं so now you tell me if there is a place which is high pressure zone do you think there will be rainfall answer will be no so rainfall will happen only when there is a place which is not stable and the place which is not stable is related to convergence zone जोठी की कन्वर्ज होची चारियाडू प्रेशर लो हे गला भाई कन्वर्ज हो चारियाडू आसीबे बर्तन विंड मॉइस्चर ने केस्ते देन सेठी वर्षा हबो सो इन हाई प्रेशर जोन द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर इज इट इज ए प्लेस व्हिच इज a stable condition there will be clear sky because there is clear sky there won't be any rainfall so the rainfall condition won't applicable in high pressure zone or divergence area so rainfall will be applicable in which area na low pressure area correct so if humidity in atmosphere then there will be rainfall and instability atmospheric there will be cloudy sky cyclonic sky कोठी ना जोठी तमरो लो प्रेशर बनिवो एनी डाउट इन दिस सो वी अंडरस्टूड कि सी क्लाइमेटोग्राफी रो मो स्लोली पळे आसले ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर ता विषय एनालिसिस करी कि देन हमें वर्तमान पळे आसले कि विंड विषय चर्चा करिया पे तो फर्स्ट कांसेप्ट हमें कहले कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस केस रे केते बेले वर्षा हबो आ केते बेले हबोनी करेक्ट नो दैट पार्ट इज क्लियर now the concept of is pressure belt the pressure belt again मु कहली कि लेट सपोज 0 डिग्री तो जनरली 0 डिग्री रे तुमको कोन मिलो लो प्रेशर जदी लो प्रेशर मिलिला 0 डिग्री रे दैट मींस हबो कोन अपलिफ्ट हबो गैस अपलिफ्ट हैला एंड से ऊपर को गला पर ऊपर हे जो तारा डाइवर्जेंस वाला सिचुएशन देन से एपड को डाइवर्ज करबो देन एपड को डाइवर्ज करबो एमिति 30 डिग्री बर्तन 0 डिग्री एपड 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ कंप्लीट राइट दिस इज आर this is I am saying 0 degree then 30 degree then 60 degree and then 90 degree similarly tole mu noti 30 degree then 60 degree then 90 degree this is south this is south this is south this is down this is north this is north okay now what I am saying is 0 degree रे टेंपरेचर बढ़िला ये बर्तन ये जो गैस उडा थिला ना से माने बर्तन आकाश को उठिले अपलिफ्ट हैला पर हबो कोन आकाश रे से माने ट्राई करबे डाइवर्ज होआ पे एंड डाइवर्ज हे कि से माने कन्वर्ज को एरिया रे होतदी ना 30 डिग्री रीजन रे डाइवर्ज हेले देन 0 रे तो डाइवर्ज हेले बट 30 डिग्री रे कोन होतदी कन्वर्ज होला पर ये तळु आसिला पर एठी आसी कि से माने पुनी डाइवर्ज होतदी काहे कि ना एटा तमर लो प्रेशर सरफेस रे तमर 0 डिग्री टा लो प्रेशर अगेन 30 डिग्री होची तमर हाई प्रेशर 60 डिग्री होची तमर लो प्रेशर 90 डिग्री होची तमर हाई प्रेशर तो बर्तन बाबू एठी जदी हाई प्रेशर हला एठु अगेन से कोन करबे कन्वर्ट हेजिबे जो जे सर्कल कंप्लीट हला तो द फर्स्ट सर्कल वी कॉल इट एज हार्डले सर्कल इज दैट क्लियर हार्डले सर्कल द फर्स्ट then we have 30 to 60 degree ताको हमें कहछे फेरल सेल then the last cell is called polar cell
HFP करेक्ट सो HP गोटे गैस थाए HP गैस ता मझे आ जाउची F सो HFP हार्डले फेरल एंड पोलर सेल एनी डाउट खाली जदी क्वेश्चन आसीबो कि राइट फेरल सेल इज बिटवीन व्हिच एंड व्हिच देन एटलीस्ट यू शुड मेक ए नोट लाइक ओके 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ टू 60 डिग्री साउथ ओके द नेक्स्ट कांसेप्ट कि बर्तमान तुम देखिलो कि भाई ठीक अछि एटा होची 0 डिग्री नाउ दिस 0 डिग्री याकू हमें भी कोन कहूचे ना इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन or we call it as ITCZ. What we call it as ITCZ. Now what happens in ITCZ area? See, I am giving a overall glance. Then तमे जेतले NCERT book पढिबो सेथु रिवीजन कर देले then तुमको आहुरी भी क्लैरिटी मिल जियो करेक्ट नो now what I am saying is at this 0 degree region we are saying it as ITCZ zone तो ITCZ हम एथि कहउछे because सेठी होची लो प्रेशर क्रिएट होची then सेठी जो wind बहुची से wind होची ईस्टर्ली wind जोटा की अछि absent easterly wind जोटा की अछि absent and because of this because we call it as a calm condition कोन कहू जाको हमें calm condition now ए calm condition को जेतले wind absence रहउछि ताको also हमें कहू जे doldrum and when the wind will be there sufficiently then there will be rainfall correct no जदी wind तमर absent रहला calm condition ताको तमे कहू जे doldrum जदी wind तमर रहिला and sufficiently because of see obviously मु कहबी कि 0 डिग्री सफिशिएंट वर्षा होना नाही अमेजन एरिया तमे जदी देखिबो हठात दिन जाको खरा हला बोले सब दिन ही सेठी को बळिया सिचुएशन हबो ना तमरो काला बैसाखी वाला कंडीशन करेक्ट नो कि जेते बेले सूर्य डायरेक्ट थिबे सेठी सिचुएशन क्रिएट केमते होतो सकाळे गरम हैला सरफेस तातिला देन हठात ना ऊपर उठिला देन कुमुलो निम्बस क्लाउड बनिला देन चक्रपात पूरा वर्षा पूरा सफिशिएंट वर्षा हबो जोटा कि इवनिंग रे स्टार्ट हबो ट्रू बिकॉज दिन तो लगे सरफेस तो गरम हवा भाई हाँ कि नहीं देन नाउ द कांसेप्ट इज कि जदी तमे देखियो ऊपरे 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 जदी तळे लो प्रेशर होची ऊपरे तमरो कोन थिबो हाई प्रेशर एरिया तो हाई प्रेशर इज काम एरिया बट तळे जदी तमे देखियो लो प्रेशर इट इज नॉट काम एरिया इट इज मोर डिस्टर्ब्ड एरिया am I right so at 0 degree in surface there will be too much of rainfall because it is called thermal induced सूर्य किरण पड़िला सरफेस तातिला सरफेस जेहेतु तातिला 0 डिग्री ना सरफेस तातिला इक्वेटोरियल रीजन तो 0 डिग्री सरफेस तातिला जति कि एयर वगैरह थिला सब उठकी गला जदि हेटी पानी रहिला देन मॉइस्चर ऊपर को उठी गला देन ऊपर जाई कि से माने अगेन डाइवर्जेंस बनेले तो डाइवर्जेंस जोन जोटा सेटा होची काम जोन जोटा कि हमें कहि देले ए जोन टा होची ऊपरे ताको हमें कहू जे डोल्ड्रम बिकॉज़ सेठी कोनोसी डिस्टर्बेंस होवर नै बट जदि तळे हमें देखिबा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होबो बिकॉज़ ऑफ द लो प्रेशर इट हैज बीन created any doubt here okay so and in total what we call it as jodi epode mu kaibi hardless cell epode hardless cell that means up to 30 degree north to 30 degree south we call it as tropical tropopause kon कह जाता है वो tropical tropopause then there is a polar front and polar tropopause तो polar front केतले बनुची ना जेतले तमे 60 डिग्री आसी जीवो 60 डिग्री पता नहीं ये गला 30 डिग्री रो कांसेप्ट गोटे आसीबो 30 डिग्री कांसेप्ट ताको हमें कहउचे हॉर्स लैटिट्यूड कोन ताको कहउची हॉर्स लैटिट्यूड तो बर्तमान मते को हॉर्स लैटिट्यूड जोटा कि 30 डिग्री तमरो तळे होची हाई प्रेशर एंड मु कहितले अगर हाई प्रेशर जोन रे तमरो क्लियर स्काई थिबो हाई प्रेशर रे तो तमरो वर्षा हबारी नै ट्रू तो जदी वर्षा होउनी ताले सेठी कोन हबो डोल्ड्रम रो कंडीशन तो हॉर्स लैटिट्यूड देयर विल बी क्लियर स्काई and because of clear sky because वर्षा हबनी that means there will be desert so most probably in the world map you will find at 30 degree generally there will be desert area काहे कि because एठु पानी उठिला गरम हैला this is low pressure 0 degree वाला concept ऊपर को उठिला then 30 degree again डाइवर्ज हो गला that means एपटो भी सेमती 60 डिग्री रु आसिला then 30 डिग्री डाइवर्ज हो गला एंड एठी तो डाइवर्ज हो जाउछनी भाई कोठी 30 डिग्री ताले एरिया रे तो वर्षा ही होनी तो वर्षा हबनी माने ए एरिया रे तमरो कोन रहइबो desert is that clear see this is one condition second condition is कि वर्षा हैला किंतु गोटे पहाड़ पळे आइला जो पानी आसला पहाड़ साइड रे बाडे गला तर तार विंड साइड एरिया जो पट दिबो से पटरे तमरो कोन हेजिबो तमरो वर्षा हबनी तो से पटटा तमरो हेजिबो desert right so this is what we call hot latitude जो कि हमर बनुची clear sky desert and this is high pressure zone this is stable zone because it is stable zone and it is high pressure zone there is no rainfall because of that there is desert condition
This is what we call हार्डले साइकिल कंप्लीट 0 रु एपट गला हार्डले साइकिल 30 रे से मर्ज होला देन नेक्स्ट कांसेप्ट होची कि 60 डिग्री जोटा देखा होची सेठी कोन होय ना सेठी कोल्ड फ्रंट आ वार्म फ्रंट काहे कि तो मने पकाओ तमरो आमे जो वार्म करंट कथा कहउले वाटर ओशन करंट राइट 0 डिग्री चलला 0 डिग्री चलला देन 60 डिग्री गला आलको एपटू जतला फेरिवो एठी वार्म करंट अछि एंड एपटे सब कोल्ड करंट अछि 60 डिग्री जाय तो पळेला नॉर्वेजियन जाय हां कि नै नॉर्थ सी नॉर्वेजियन जाय तापर जेतले से बुली की आसुचंती एठी कोन होचे जनरली एपटे गरम पानी एपटे ठंडा पानी am I right तो तुम पढ़ियो ना साइक्लोन कंडीशन में कि 60 डिग्री जो साइक्लोन टा क्रिएट हो बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड करंट एंड वार्म करंट सेठी जेतले कोल्ड फ्रंट गोटे कोल्ड करंट एंड एपटे वार्म करंट आसला देन जेतले से बाडे हबो गोटे जोटा हल्का थियो सेटा ऊपर उठिबो एंड ऑब्वियसली वार्म टा जदी ऊपर उठिला जोटी की वार्म ऊपर उठिला समहाउ सेथिरे जो मॉलिक्यूल जोड़ा थिबे से माने कोन गले ऊपर उठिला पारे से माने अगेन दिस इज ए लो प्रेशर जोन एंड 30 डिग्री इज हाई प्रेशर जोन देन से कोन करिवे हाई प्रेशर को कन्वर्ट हेबे एपटे माने हाई प्रेशर को डाइवर्ट हेबे तो ऊपर मोर बनला डाइवर्जेंस तळे 60 डिग्री मोर बनला कन्वर्जेंस एपटे आसुची वार्म करंट 90 डिग्री रु आसुची कोल्ड करंट देन एठी से माने पीटी के एठी वर्षा हो तो 60 डिग्री कैन आई से 60 डिग्री कैन बी कंसीडर्ड टू बी ए डोल्ड्रम एरिया कैन आई से 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ कैन बी कंसीडर्ड एज डोल्ड्रम एरिया अर्थ रो सरफेस रे 60 डिग्री डोल्ड्रम कुहा जाई परिबो की answer will be no because this doldrum area is where it is a calm condition correct no wind is absent but here the 60 degree jodi mu kahi ki surface re there is wind there is wind because convergence and jehetu convergence zone it is doldrum to hobo hi it is not a stable condition that means there will be rainfall so at 60 degree there will be rainfall so now the concept is we understood this graph कि जदि मु कहबी कि बर्तन आईटीसीजेड कथा भी हमें जानिले कि आईटीसीजेड 0 डिग्री रे हमें कहले देन जतले हॉर्स लैटिट्यूड कथा कहले हमें 30 डिग्री रे कहले देन पोलर फ्रंट हमें कहले 60 डिग्री पोलर फ्रंट हमें कहले 60 डिग्री तो मिड लैटिट्यूड गोटे होची ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज देन 30 रु 60 मिड लैटिट्यूड ट्रोपोपॉज एंड पोलर ट्रोपोपॉज तो मु पूरा अर्थ को डिवाइड कर देबी कि 30 60 90 सिमिलरली साउथ रे 30 60 90 बर्तन 8 टू 8 तक 30 रु 30 मते कोन मिलियो ट्रॉपिकल ट्रोपोपॉज देन 30 रु 60 एपट साइड रे एंड 30 रु 60 मिड लैटिट्यूड ट्रोपोपॉज एंड 60 रु 90 दिस इज पोलर ट्रोपोपॉज 60 रु 90 साउथ रे भी पोलर ट्रोपोपॉज एनी डाउट एति की जो ओके नाउ जते क्वेश्चन आसी गला पूरा टोटल जति की अछि को एरिया रे तुमको लागुची डेजर्ट हबो ना सेही एरिया जोठी डोल्ड्रम हबो ट्रू डेजर्ट सेही एरिया रे रहबो जोठी डोल्ड्रम हबो दैट मींस क्लियर स्काई थिबो absence of rainfall हबो जदि डोल्ड्रम एरिया ताले दैट इज द 30 डिग्री वाला एरिया जोटा कि हमें हॉर्स लैटिट्यूड कथा कहउछे एनी डाउट सो 0 डिग्री रे जो टेंपरेचर दैट इज बिकॉज ऑफ द टेंपरेचर इंड्यूस्ड और थर्मल इंड्यूस्ड बट 60 डिग्री रे दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डायनेमिकली इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द वार्म एंड कोल्ड फ्रंट डायनेमिकली एठी जो तमरो करंट ऊपर को उठिला काहे की बिकॉज ऑफ द एपट आसिला वार्म करंट एपट आसिला कोल्ड करंट माने पकाओ ना ओयोसीओ माने पडुची क्यूरोसियो देन तमर गला नॉर्थ पैसिफिक देन तमर एपटे अलास्का देन हठात किना जतल तळुक आसुची क्यूरोस ओयोसियो तळे थिला क्यूरोसियो ऊपर होची ओयोसियो दैट मींस ओयोसियो इज कोल्ड एपटे माने सब 60 डिग्री जाय माने होचली वार्म कोल्ड आउ वार्म करंट एंड वार्म करंट बाडे हेबे देन ऑब्वियसली वार्म करंट रो जो मॉलिक्यूल्स थिबो से माने सब ऊपर को उठिला पारे से माने कोन करिवे अगेन कन्वर्ट करिवे 30 डिग्री पटको एंड एपटे डाइवर्स करिवे 90 डिग्री पट सॉरी उठिबे हां 90 डिग्री पटो डाइवर्स जबो देन एठी 90 डिग्री रु पोलर रु सरफेस रु जो सरफेस रे तो तमर हाई प्रेशर थियो बिकॉज़ दिस इज ए कोल्ड एरिया राइट एठी कोनो से टेंपरेचर वगैरह नाही हाई प्रेशर रु से 60 डिग्री आडे मूव करियो एंड एठी तमर वर्षा हो तो जदी मु कहबी कि ए भीतर मते सबटु कोठी अधिक रु अधिक डेजर्ट मिलियो दिस इज द रीजन 30 डिग्री वाला रीजन एनी डाउट इन दिस फाइन नेक्स्ट tropical region ro continent ro west side is considered to be dryness and ocean ro west side is generally considered to have warm water and east side is cold water I have already explained this when we are discussing the ocean current se kon कहउची कि जदि मु
एटा वर्ल्ड बने देली एठी मोर रही गला नॉर्थ अमेरिका, दिस इज माय साउथ अमेरिका, दिस इज माय अफ्रीका somehow, and this is my Europe and Asia, and this is my ऑस्ट्रेलिया। तो आमे ऑलरेडी देखिथिले ना कि जदि मु एठी गोटे 0 डिग्री नेली ट्रू, तो एठी कोन हबो ना दिस इज ओशन, ओशन रो वेस्टर्न साइड कोन रहइबो मो पाखरे वार्म वाटर, हंगी नै वेस्टर्न रो ओशन रो ईस्टर्न साइड मो पाखरे कोन रहइबो कोल्ड वाटर। तो बर्तमान मते को बिटवीन वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर किए डेजर्ट फॉर्म करिया पे हेल्प करियो, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर will help in desert cold water, that means तो तमे बर्तमान को ओशन रो दैट मींस ईस्टर्न साइड पाटे मते डेजर्ट मिलिवो, ओशन रो ईस्टर्न साइड पते मते डेजर्ट मिलिवो, ओशन रो ईस्टर्न साइड पटे मते डेजर्ट मिलिवो, ओशन रो ईस्टर्न साइड पटे मते डेजर्ट मिलिवो, ओशन रो ईस्टर्न साइड पटे मते डेजर्ट मिलिवो। बुझियला ना, बुझियला नहीं कांसेप्ट क्लियर? गुड, नेक्स्ट। सो नाउ कमिंग टू द बर्तन पड़े आसवा वेस्टर्ली ईस्टर्ली वाला कांसेप्ट। सिंपल एतिकी तो आमे जानिले कि भाई देयर इज ए पॉइंट where we used to have 0 degree Celsius, we call it as low pressure, tropical low pressure। तो 0 डिग्री रु मु टिके जीबी ऊपर को 5 डिग्री लाखे डिफरेंस रो नै की, तो 0 रु ऊपर को 5 डिग्री न 0 रु तळु को 5 डिग्री, तो 5 5 टोटल ऊपर 5 तळे 5 टोटल 10 डिग्री भीतर जो एरिया टा बनिला सेटा को कहा गला कि लेट्स सपोज दिस इज ट्रॉपिकल लो प्रेशर एरिया। क्लियर? देन 30 डिग्री को गली 30 रु 35 जाय जीबी, एपटे 30 रु 35 जीबी, तो जो 5 डिग्री रो गोटे एरिया मो पाखरे बनिला दैट्स आई एम सेइंग एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ऑलरेडी हमें इथरे देखिले ना 0 एठी नेतिले 30, 30 टा होची तमर कोन हाई प्रेशर, 0 होची तमर लो प्रेशर, करेक्ट? नाउ ऊपर सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, तळे भी सेमती सब ट्रॉपिकल सॉरी हाई प्रेशर, तळे भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। नेक्स्ट 60 को मुझे तळे जीबी, देन दैट विल बी सब पोलर लो प्रेशर, तळे भी बनिबो तमर सब पोलर लो प्रेशर। एठी लो प्रेशर बनला एंड लो प्रेशर काहे की बिकॉज़ ऑफ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट ऑफ द ओशनिक करंट। नाउ 90 डिग्री तमर पोलर हाई प्रेशर एंड 90 डिग्री नॉट पोलर हाई प्रेशर। एनी डाउट इन बिटवीन दिस टू? एती क्लियर? ओके, तो आपको जस्ट मु आपको डिफाइन करनेली कि कोठी कोठी लो प्रेशर बनुची, कोठी कोठी हाई प्रेशर बनुची। तो जदी ए एरिया रे सब मोठी लो प्रेशर मिलिला एंड एठी हाई प्रेशर मिलिला, सिंपल खाली जदी घोसीवार नाही किछि, ठीक अछि? तमे खाली एति की जानियार अछि कि 0 डिग्री रे काहे की लो प्रेशर, बिकॉज़ सूर्य रहबे बाय ट्रॉपिकल ऑलवेज इट विल बी लो प्रेशर होबे। तो जदी 0 हो गला 30 हाई, 16 लो, 90 हाई, दैट मींस वंस तमे हाई और लो जानि गला एंड तमे जानिछ कि विंड रो मूवमेंट सबले हाई रु लो हबो, विंड रो मूवमेंट हाई रु लो हबो, विंड रो मूवमेंट हाई रु लो हबो, हाई रु लो, हाई रु लो, हाई रु लो एंड हाई रु लो, एति तो हबो। नाउ द कांसेप्ट ऑफ कोरियोलिस। कोरियोलिस रो कांसेप्ट होजी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे द कोरियोलिस मूवमेंट लागी विंड जो डायरेक्शन रे जाउथिबो, जदी मु तळु ऊपर को नेली ताले से राइट साइड को मूव करिवो, करेक्ट? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे विंड रो डायरेक्शन ऑलवेज जो डायरेक्शन रे जाउथबो से तारो राइट साइड को बेंड करिवो, दैट मींस नॉर्दर्न रे तारो उल्टा हबो, करेक्ट? नाउ जस्ट सी कि बर्तमान मु जदी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गली हाई रु लो को जतले विंड आसीबो मूवमेंट तारो को आडू हबो, राइट साइड को से बेंड करिवो, जेमिति एपडू आसिला आलू से बेंड कोड करिवो राइट को, तो सब तक तमर बनि जिवो एई भलिया स्ट्रक्चर, हां कि नै? ट्रू? ओके, जदी मु साउथ रु गली, साउथ रु जदी मु ऊपर को गली, तो दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर रे कोरियोलिस फोर्स लागी विंड रो डायरेक्शन लेफ्ट को मूव करिवो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे राइट हैला आलो सदर्न हेमिस्फीयर रे लेफ्ट हबो, तो लेफ्ट हे गले विंड जदी एमिति जाई थांदा विंड बर्तन जीवो केमति एमति, दिस इज डन। नाउ इफ आई विल से कि बर्तन दिस इज माय सिचुएशन, दिस इज वेयर आई एम सेइंग 0, दिस इज वेयर आई एम सेइंग 30 डिग्री, दिस इज वेयर आई एम सेइंग 30 डिग्री, तो मु जानले कि 30 डिग्री होची हाई प्रेशर जोन एंड 0 डिग्री होची लो प्रेशर, तो विंड रो मूवमेंट तो डायरेक्ट एमिति होवा कथा, बट से टिके मूवमेंट कर देबो तो एमिति ही बनिबो, एपट सेमति एमिति बन जिवो। 0 डिग्री कन्वर्जेंस होची देखा जाउची, कन्वर्जेंस होला ओलिया, करेक्ट? दैट मींस कैन आई से 0 प्रेशर 0 डिग्री इज नॉट गोइंग टू बी a stable zone। तो 0 डिग्री रे मते सबटो अधिक कोन तमन देखा जिवो, जंगल देखा जिवो, हां कि नै? वर्षा हबो ना, सफिशिएंट अमाउंट रो वर्षा, ट्रू? ओके, नेक्स्ट
बर्तन एठी कोन कहला ना आकु को होची ईस्टर्ली मोस्ट वाली एमानकर जो ओरिजिनेशन होची एमान जो ओरिजिन होतंदी मोस्टली माने ईस्टर्न साइड करेक्ट नो जदि एमिति जाउ थांदा एपडो मूवमेंट हे के पडो तो मो एटा को मान जानी फॉर एग्जांपल दिस इज माय नॉर्थ दिस इज साउथ दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट तो एपड जो पड स्टार्ट होची जो आड को बहुची दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू से वेस्टर्ली सो आई एम सेइंग दिस एज ट्रेड विंड ईस्टर्ली नॉर्थ ईस्ट तो जदि मो कहबी कि नॉर्थ एंड ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आड़ को जाउछि से नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट दिस इज साउथ वेस्ट गोटे गोटे विंड एमिति आसिला लेट्स सपोज दिस इज हाउ वन विंड इज कमिंग नॉर्थ ईस्ट टू ओरिजिनेशन एंड डेस्टिनेशन कोठी ना साउथ वेस्ट सो वन ईस्टर्ली इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट आ गोटे होछि साउथ ईस्ट तो ईस्ट ईस्ट कॉमन ओरिजिन जो होछि ईस्ट कॉमन ताल ताको तम कोन कहि देला ईस्टर्ली एनी डाउट क्लियर now I am going to the next one 30 degree to 60 degree high pressure and 60 degree आमे करे low pressure because cold front and one from तो बर्तन ए जो wind ता से एमिति मूवमेंट करिया कथा देन से एमिति बुली जीवो एंड एमिति जदी बुली गला देन ये हे गला कोन ना तमरा वेस्ट टू जनरेट होची साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एपटे से एमिति से एटा राइट थिला राइट कोरियोलिसिस फोर्स लागी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट आडू मूवमेंट बट ड्यू टू कोरियोलिसिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर रे कोन हबो लेफ्ट आडू मूवमेंट तो सी एमिति जाई थांदा देन तार लेफ्ट को से मूवमेंट कर जिवो देन ता पाई बनि गला एमिति देन अगेन ये होची नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट दैट मींस नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट गोटे पटे जोटा के होची साउथ रे जदी ऊपर देखिबी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट को करेक्ट नो वेस्ट वेस्ट कॉमन दैट्स व्हाट वेस्टर्न एनी डाउट okay and the last one if you see this will be again easterly wind कोठी ना तमरा पोलर रीजन ठीक अछि so there is one more concept called roaring 40 furious 50s and screaming 60s okay so direct question पळे आसे परे what is this roaring 40 furious 40 50s roaring 40s furious 50s ff f1 f2 s1 s2 screaming 60s जदि एटा तमे मन रखितला screaming then it would be in the 60 degree वाला concept furious 50s f मन रखेला furious रु 50s आ बाकी रहला roaring 40s तो टेक्स्ट बुक रे अछि ताको टिके भलसे देखि दबो then the next is related to high pressure low pressure तो जाना पड़ला ना काहा को अछि के एमति अछि जाको जाना पड़ला नै high pressure low pressure zone fine okay cool next तो वर्तमान में जति कहबा कि ईस्टर्ली ओके तो आमे जानले कि भाई देयर इज ए कांसेप्ट ईस्टर्ली जोटा कि हम कहूचे 30 वाला रु 30 भितरे जो 0 डिग्री अच्छी अच्छी 30 एठी और 30 तळे साउथ रे सेठी जनरली सेना कोन होतनी ईस्टर्ली ईस्ट रु आसला एपट सेमती ईस्ट रु आसुची करेक्ट नो तो एठी होची ईस्टर्ली so this is what we call subtropical high to equatorial low subtropical high to equatorial low this is also known as a trade wind northern hemisphere re northeasterly southern hemisphere re southeasterly the rain will happen only at eastern side this is also important eastern रो जे आसुथिबो obviously continent एठी continent रो से eastern side रे ही हबो true easterly wind will make a rainfall at the eastern side of the continent but western side of the ocean will that be clear eastern side of the continent but western side of the ocean you have to be very carefully observe right कि eastern side रे जेतला आसिला एठी तुमको गोटे continent मिलियला एठी भाबिनो पहाड़ अछि देन ए पहाड़ रो eastern side रे ही हबो but if I will say westerly wind वर्षा को पटे करबो ना western side of the continent काई ना जदी एठी गोटे मोर पहाड़ रेंज पळेला ताले एई पट साइड रे वर्षा आइबो तार eastern side रे वर्षा ही होबो clear so easterly is connected to having a rainfall at the eastern side of the continent westerly is related to having a rainfall at the western side of the continent so when wind comes to western part no moisture remains so there will be desert or no rain that's what we call offshore one is called onshore the other one is called offshore for example you talk about odisha now odisha jodi mu dekhibi odisha ro jo coastal area
correct no? So now it is, can I say it is because of easterly? सी एमती गोटे सिचुएशन अछि ना जोटा 23 डिग्री अधे जाइए भितर तो आउ टिके ऊपर गले मते 30 भी मिल तो ए 30 भितर तो इस्टर्ली ही बोइबो ना हां कि नहीं हाँ देन 0 डिग्री एठी अछि 0 डिग्री बहुत तळे भारत भी भितर सब कंप्लीट 0 डिग्री देन एठु एमिति बहिथिबो दैट इन मैक्सिमम जहा अछि दैट विल बी रिलेटेड टू ओडिसा पर्सपेक्टिव रे मो नॉर्थ ईस्ट रो साउथ वेस्ट ईस्टर्ली विंड और वेस्टर्ली विंड this is at which date that is also important the date is March 21 September 23rd northeast to southwest easterly am I right or wrong eastern good now मते तमे को ओडिसा रो ता माने मु कहूची एटा होची मार्च 21 रे आउ सेप्टेम्बर 23 रे सूर्य कोठी अछथि 0 डिग्री रे हंगी नै वर्षा कोठी हबो ओडिसा रे वर्तमान मास चली अगस्त सूर्य लगभग कोठी थिबे एई तळे ना ए तळे सी 0 डिग्री ऊपर थिबे ना 0 डिग्री तळे थिबे सूर्य अगस्त मास रे व्हाट डू यू थिंक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर फर्स्ट आज डेट रे सूर्य कोठी अछथि नॉर्दर्न रे तो जदि सूर्य एठी अछथि ताले वर्तमान को ओडिसा रे वर्तमान जो ट्रेड विंड बहुत थिबो सेटा ईस्टर्ली ना वेस्टर्ली ओडिसा रो ट्रेड विंड वर्तमान प्रेजेंट टाइम रे ईस्टर्ली थिबो ना वेस्टर्ली थिबो ईस्टर्ली करेक्ट नो बिकॉज़ 0 डिग्री एठी अछि मोस्टली इट विल बी ईस्टर्ली नाउ ईस्टर्ली विंड रे जदि वर्षा हबो को पार्ट रे अधिक वर्षा हबो ईस्टर्न साइड रे हां कि नहीं जदि मु केवल खाली ईस्टर्ली रो कांसेप्ट नै मु आउ कोनोसी एग्जांपल नौनी कि प्रेशर जोन कोठी कोन बनिला सूर्य कोठी रहिले देन सी वर्षार कारण बहुत अछि करेक्ट नो देन लघुचाप पळे आसिला लघुचाप आसीवार कारण कोन अगेन प्रेशर जोन रे पड़े पड़े जाइछि कोठी गोटे लो प्रेशर क्रिएट हेगला कोठी हाई प्रेशर क्रिएट हेगला देन लघुचाप बाय डिफॉल्ट हो देन जदि लो प्रेशर अछि देन से धीरे धीरे एडी वर्षा कंटीन्यूअसली होउथिबो बट मैक्सिमम वर्तमान जो सिचुएशन ने जो वर्षा तमर होउछि तो बे ऑफ बंगाल रो पानी गरम थिबो ट्रू और फॉल्स बे ऑफ बंगाल रो पानी गरम थिबो ओके तो बर्तमान ईस्टर्ली विंड बहुची तार मॉइस्चर से धरिक आसीबो एंड एठी भाबिनियो तमर किछि छोट छोट माउंटेन अछि एमाने आसी के माउंटेन रे पिटेबे वर्षाटा इपटे अधिक होबो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑनशोर रीजन द अदर साइड इज कॉल्ड ऑफशोर रीजन जो पट रीजन रे बिकॉज ऑफ द पहाड़ पहाड़ पई जो पट रीजन रे वर्षा हैला से पट हे गला ऑनशोर तो मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ओडिसा विल गेट sufficient amount of rain western part of the odisha won't get much amount of rain because of this easterly wind that means because of that this जदि ए जो विंड तमे जदि महानदी देखिबो ए महानदी रे वर्ष रे अधिक रु अधिक समय सुखिला पडुची हंगी ने काहे की सुखिला पडुची जदि ए महानदीटा एपट साइड रो ओरिजिनेट की एपट को जाई थांदा सुखिला पडंदा एटलिस्ट बिकॉज ऑफ ईस्टर्ली वर्षा हबो वर्षा हेले ईस्टर्न साइड रे बहुत वर्षा हबो किंतु समहाउ ईस्टर्ली जेतले बहुची एपट साइड रे जोठी की अमरकंटक रीजन रे जेतले बाहर ची सियावा माउंटेन रो जेतले बाहर ची जदि से रीजन रे समहाउ वर्षा सारा वर्षा न हैला देन सुखिला पडिबो ट्रू अगस्त पर सीजन चल ना से टाइम रे से जना पड़ला कि जेहेतु ओडिसा तमे जानिछ कि ईस्टर्न साइड रे बेसी भी बड़ बड़ माउंटेन रेंजेस नाही वेस्टर्न घाट भलिया ट्रू जोथि पई कि ए वर्षा टाइम छत्तीसगढ़ जाय भी जीवो मॉइस्चर काहे ना मॉइस्चर को बाधा करिया पई कि नाहांती जदि पहाड़ थांदा मॉइस्चर ब्रेक ही थांदा तो जेहेतु से सेपट को जीवो ऑब्वियसली कोन हबो छत्तीसगढ़ रे जदि वर्षा हबो ताल तमे देखियो महानदी रे फ्लड आसिला एंड दैट विल बी मोस्टली ड्यूरिंग द सीजन ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर ए भलिया आ अगस्त सेप्टेम्बर रे वर्षा हबार कारण होची एपटे कोन बे ऑफ बंगाल ताती थिबो तो पानी थिबो ईस्टर्ली बहुची तो से मॉइस्चर लेकी जीवो एंड जोठी ताकू लागिला कि प्रेशर जोन हैला सेठी कि मते बोही कि लेकी जीवार अछि एंड समहाउ ए सब जो अपलैंड गुडा अछि से गुडा ताती थिबो बिकॉज ऑफ सूर्य जस्ट छाडी गई छली तो एगुडा ताती थिबो देन सेठी लो प्रेशर क्रिएट हेजी एठी हाई प्रेशर क्रिएट हेजी देन ऑब्वियसली वर्षा हेई ही जीवो एनीवे ऑनशोर ऑफशोर जाना पड़ला तो ऑफशोर हबे ऑफशोर इज रिलेटेड टू डेजर्ट इज दैट करेक्ट द स्टेटमेंट because of offshore there might be a situation where desert will come into picture is that correct okay because of the westerly the desert will be found in the eastern side of the continent whether it is true or not for westerly wind the desert will be found in the eastern side of the continent true I'm saying westerly because of westerly west side of the continent re barsa habo
eastern side रे desert habo. I am saying again repeatedly, because of westerly, the desert will be found in eastern side of the continent. True or false? True. Okay. हाँ किसी किसी जिनस मु टिके पढ़े पढ़ कर दिए तो से मैंडेटरीली सुनिया पड़ियो नॉर कि एमजी हां ठीक আছে इस्टर्ली कहउछि तो इस्टर्ली कहउछि राइट ओके सो rain will happen only on the onshore तो now you understood the concept कि already तमे जानिछो but onshore रे तमरो केबे desert हबनी is that true onshore is associated with desert now I am changing the question okay onshore is associated with desert is that true or false onshore is associated to desert no false false okay very nice offshore is associated with vegetation area offshore is associated with vegetation that is also false onshore is associated with cold current onshore is associated with cold current false you got the okay hope this is clear right so on offshore if ocean water is present the warm air above water surface will move out by easterly wind hence cold air result into aridity very important on offshore if ocean water is present जदि सेठी वार्म एयर भी रहिला above the water surface that will also move out for example तमे देखो गुजरात वाला रीजन see now what will be the situation gujarat comes under india रो left side रे जदि इंडिया रो लेफ्ट साइड रे गुजरात अछि and एठी मोर बहुची कोन इंडिया रे ईस्टर्ली करेक्ट एठी somehow जदि भी वार्म वाटर तम पाखरे रही भी गला ताहाले ए जो ईस्टर्ली ये कोन करियो ताको बोही कि नेकी पळेबो कोठी ने सोमालिया पाखु नै जो तो बाय डिफॉल्ट एठी वर्षा ही हमनी and जदि वर्षा न होला ताले ए एरिया रे बनियो कोन डेजर्ट एरिडिटी क्लियर एनी डाउट इन दिस ओके सब ट्रॉपिकल wind from west सब ट्रॉपिकल रे कोन हला ना wind from west सब पोलर रु सब ट्रॉपिकल बर्तन हम कहू जे रीजन होची दिस इज 0 दिस इज 30 दिस इज 60 दिस इज 30 दिस इज 60 नाउ 30 थिला तमरो लो हाई प्रेशर एरिया 60 होची तमरो लो प्रेशर एरिया एठू तमरो कोन हबो 30 रु जेतले तमरो 60 को जीवो हाई रु लो को जीवा कथा बट लेफ्ट आड़ को मूवमेंट 30 रु 60 को हाई रु लो को जीवा कथा देन राइट साइड को मूवमेंट दैट मींस वेस्टर्ली करेक्ट नो सो सब ट्रॉपिकल रु सब पोलर जेतले जीवो 30 रु 60 सब ट्रॉपिकल इज 30 सब पोलर होची 60 तो 30 रु 60 को मूवमेंट करियो बिकॉज़ 30 इज कंसीडर्ड टू बी हाई प्रेशर 60 इज कंसीडर्ड टू बी लो प्रेशर देन तमरो बनिबो वेस्टर्ली वेस्ट टू ईस्ट आड़ को हेंस वेस्टर्ली विंड it is also called prevailing westerly the speed will increase in southern hemisphere speed will increase in southern hemisphere not in northern hemisphere because in southern hemisphere we generally don't have from 30 to 60 degree we don't have much more continents am I right 30 degree ପରେ southern hemisphere रे continent ही नहीं that's what the speed of the westerly see these are very good concepts right कि मे बी बहिरू खोजी बाहर कला टाइम लगी जाय पारे बट एटलीस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज एवरीथिंग so that in case if there would be any question related to this at least that can be easily handled because in southern hemisphere we don't have much more land mass as the latitude increase in southern hemisphere from 30 to 60 because of only oceans the speed will be more कहीं ना स्पीड ऑफ विंड को किए ब्रेक करंदा जदी तम पाखरे कॉन्टिनेंट था जदी कोठी गोटे पहाड़ आसिला देन पहाड़ आसीबार ही नहीं चांस सो सदर्न हेमिस्फीयर रे जदी कहबो वेस्टर्ली रो कांसेप्ट सदर्न हेमिस्फीयर रे वेस्टर्ली रो जो विंड रो स्पीड प्रिवेलिंग विंड तार जनरली अधिक थिबो नाउ हायर द लैटिट्यूड lesser will be the land mass in the southern hemisphere then speed of the westerly wind will increase that's why we call it as 40 degrees south रे we call it as roaring 40s then 50 degrees south furious 50s ahuri badila correct no speed ahuri badla 60 degrees south shrinking 60s speed ahuri badila jette tame agu agu badi chalebo roaring furious shrinking bujhela na bujhela because there is no land mass okay so initially roar then bahut furious then finally shrinking okay now the last one polar जोटा 90 डिग्री रे अछि
सब पोलार जोटा 60 डिग्री अछि दिस इज व्हाट वी कॉल पोलार ईस्टर्ली काहे कि 90 डिग्री तमे आना नॉर्थ को जेतले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये हाई प्रेशर अछि ये लो प्रेशर अछि एमिति आसिया कथा बट से राइट साइड को मूवमेंट करियो बिकॉज ऑफ कोरियोलिसिस फोर्स राइट एंड बिकॉज ऑफ द कोरियोलिसिस फोर्स एंड जोटा कि बहुत हेवी मात्रा रे कोरियोलिसिस फोर्स कम पार सब अधिक कोरियोलिसिस फोर्स कोठी अछि पोलार रे ट्रू बिकॉज हेवी मात्रा रे तो सबठु अधिक बेंड जदी तुमको देखा जीवो ताले एही मानकरे सबठु अधिक बेंड देखा जीवो तो पोलार ईस्टर्ली नाउ ITCZ is something what we call intertropical convergence जोटा कि हमर इक्वेटर रे देखा जाय कोरियोलिस फोर्स हमें कहले कि कोरियोलिसिस रो इफेक्ट हुए केवल अर्थ रोटेशन रु फेरेल लॉ सी हमें देखि देला ना गोटा होची H P मधुरे कि आस्थिला F हां कि नहीं बिकॉज ऑफ फेरेल लॉ गोटे फेरेल लॉ गोटे बनला दिस इज फेरेल सेल गोटे फेरेल लॉ थिला ना नॉर्थ रु जेते बेले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे जेते कोरियोलिसिस फोर्स लागुची तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे जेते अर्थ रो मूवमेंट एमिति अछि देन ये कोन करछि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे जेते तमे तळु ऊपर को जाउछ या फिर जो डायरेक्शन रे तमे जाओ सेतले से राइट साइड को डिफ्लेक्ट करियो बाय डिफॉल्ट दैट इज द कांसेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड effect at equator equal to 0 degree re coriolysis force 0 and maximum at polar this is the sequence of coriolysis force anything related to coriolysis force comes it is related to earth rotation it is based on Farrell law according to Farrell law in the northern hemisphere the wind will deflect towards the right directions then effect at equator is 0 and it will be maximum at polar any doubt okay and what are the other concepts from prelim perspective that we understood कि instability कोठी हबो ना जेतले लो प्रेशर जोन थिबो stable condition होची high pressure zone जोठी कि desert wave formation हबो doldrum is nothing but the calm condition जोठी कि equator low pressure exactly 0 degree पूरा 0 डिग्री रे सेठी पूरा काम कंडीशन थे बिकॉज गरम हैला ऊपर गुठिला पर से साइड हे गला देन एठी कोनोसी विंड एठी कोनोसी माने कोन कोनी कोन कोन क्लाउड फॉर्मेशन वाला चांस होनी से माने मूवमेंट करि गले डाइवर्ज हो गला देन पूरा एग्जैक्टली इक्वेटर रे हम बनुची कोन ना डोल्ड्रम रो कंडीशन काम रो कंडीशन सिमिलरली एग्जैक्टली 30 डिग्री काम कंडीशन एग्जैक्टली 60 डिग्री काम कंडीशन एग्जैक्टली 90 डिग्री काम कंडीशन ए भलिया कंसेप्ट फर्स्ट लैटिट्यूड 30 डिग्री पोजीशन विंड इज स्टेबल हाई प्रेशर एति के हम ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिछे